Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444 and 2342-1050. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी। आज सोमवार है। आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके लिए आप हमें 2331-4444 और दूसरे नंबर 2342-1050 पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। श्रोताओं आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक विजय भूषण जी। विजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। और सबसे पहले मुख्य समाचारों के साथ है वैभव। Absolutely, Nikhil. We begin with the headlines. Indian equity indices ends on strong note with Nifty crossing a 25,000 level. Sensex gains 611 points. Nifty closes at 25,010. Second India-Singapore ministerial roundtable held in Singapore. Bilateral trade crosses $30 billion and crude oil prices gain 1%. Brent crude is trading 2.25% up to $80.80 per barrel. घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 611 अंक की बढ़त और निफ्टी 25,000 के स्तर को पार कर 25,010 पर बंद हुआ। भारत और सिंगापुर के मंत्रियों के बीच दूसरी गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब अमरीकी डॉलर के पार पहुंचा और क्रूड ऑयल में 1% की तेजी तथा ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 2.25% ऊपर चढ़कर $80.80 प्रति बैरल पर रही। भारतीय घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज मजबूती के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 611 अंक यानी कि 0.75% के उछाल के साथ 81,698 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के अंत में 187 अंक की बढ़त यानी कि 0.76% ऊपर चढ़कर 25,010 पर आ गया। बीएसई के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 0.5% की तेजी देखी गई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% का उछाल दर्ज हुआ। Indian equity indices ended on strong note with Nifty at 25,000 level today. At the closing bell, the BSE Sensex closed 611 points or 0.75% higher at 81,698. The NSE Nifty was up by 187 points or 0.76% to close at 25,010. All the sectoral indices ended in the green with information technology, metal, oil and gas, realty up 1 to 2%. BSE mid-cap index was up 0.5% and small cap index was up 0.2%. In the Sensex index, 22 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were HCL Tech 3.4%, NTPC 3.2% and Bajaj Finance 2.8%. Conversely, the major laggards were Adani Port 0.54%, Maruti 0.45% and Kotak Bank 0.44%. In sectoral indices at the BSE, 18 out of 20 sectors logged gain. The top gainers today were metal 2.03%, realty 1.69% and consumer durables 1.43%. The top laggards were services 0.21% and telecommunications 0.03%. The overall market breadth at the BSE was positive as out of 4,197 companies, shares of 2,189 companies advanced. 1,860 declined and 148 remained unchanged.
विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए और 90 पैसे पर बंद हुआ। वहीं डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.01% की गिरावट के साथ 100.70 पर रहा। विजय जी, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज बाजार की जो चाल रही, हरियाली नजर आई और अभी अगर हालात देखें तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का बदलाव नहीं नजर आ रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से तो बदलाव ऊपर की तरफ जरूर है जी। 1 अगस्त को हम लोग 25,000 के सूचकांक के ऊपर गए थे निफ्टी में जी। और अब हमने दोबारा बीच में थोड़ा मार्केट नीचे गया और अब हम दोबारा 25,000 के सूचकांक पे आ गए। तो इस तरीके से निफ्टी ने वापसी की है 25,000 की और ये बहुत अच्छा संकेत है। Absolutely. So looking at global cues, whereas Indian markets have stabled themselves in a large context, do you feel that this will continue in a longer term, say now that from the government's point of view, at one end we know that the government is stable and is working on continuing the policies that were continuing earlier, and on the other hand we are making strides, just as we saw or we were talking about the second India-Singapore ministerial roundtable, bilateral trade crossing $30 billion, continuously upgrading the relations which we have with the other countries. So I think this is very positive, both internationally and domestically. I think the real strength of a country lies in its own people, and the support that the Indian stock market is getting from their own investors. If you look at the data of number of investors being added, last month there was a record addition of number of demat accounts. So, all this gives us the strength. And now that, whenever we have sometimes negative news and market comes down, it always gives a positive, it comes back. So I think this is a market which you call a market which you can buy on dips. But yes, you have to be careful because it's not a market which is, there are no low-hanging fruits, so you have to be careful. So we have to buy on dips, but there are no low-hanging fruits. That's a very prudent call, sir. And one more question that I have is the fact that earlier we were actually discussing about the FPIs pulling out a lot of money from Indian markets, but the same being overcompensated rather by Indian domestic push, which the Indian investors are doing, Indian companies are doing. Do you think that this will be a trend even in the coming days, that even though the FPIs might pull out more money from India because their own markets might not be doing that well, but our own investors, our own people will compensate or rather overcompensate by putting in or pumping in our money, the Indian money that is? I think our investors are overcompensating, and the difference now is only 1.15% between the total investment of foreign investors and domestic investors. And what is interesting is this is June statistics. By the time we come to September statistics, you will see that perhaps we are more or less equal. So, and the FII holding has come down from 25% to 18%. Absolutely. So, the whole picture is changing, and the domestic institutional investors are getting stronger, and so is the retail. So I think it augurs well for our market. और इस बीच हमारे साथ में बेंगलुरु से एक श्रोता एनआर प्रसाद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। प्रसाद जी, कार्यक्रम में स्वागत है, आपका प्रश्न पूछिए। Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Mr. Vijay Bhushan, there's one question. See, Indian manufacturing has got a tremendous growth in the last 1 year, is almost for 50% up. Even US experts says that India is the best manufacturing hub for any investments. I would like to ask you, in this manufacturing, which sector will be ideal to invest? Like automobile or coal, steel, pharma, or different sectors? Which is the best sector to invest now? Thank you. This is my question. Well, I think the manufacturing sector is likely to do well, and as you said, I think defense is going to look up quite well. So is railways, and also all companies connected with the infrastructure sector.
So I think those are the areas where manufacturing should see a boost. As you know, that we have a PLI scheme, production linked incentive. So all those sectors where the scheme is there, I think this is going to have a very positive impact. विजय जी, जिस तरह से इन्होंने सवाल पूछा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा, इसी से जुड़ी एक बात मेरे जहन में आ रही है। अभी जो सरकार ने यूपीएस जो शुरू किया है, जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही है बहुत ज्यादा, अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो आपको इसमें क्या संभावनाएं नजर आती हैं? नहीं, देखिए, एक तरह से सरकार ने गारंटी कर दिया है कि इतनी तो आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि एक ये हो रहा था एनपीएस में जो आप करते हैं तो आपके पास अंत में क्या आएगा, तो एक उसकी वजह से लोग परेशान थे, खास तौर पे जो जितने भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। तो एक तरीके से उनको पता चल गया कि ये तो हमें मिलेगा, हो सकता है एनपीएस में उनको ज्यादा मिल जाए, और आगे ये भी प्रावधान आ जाए कि अगर एनपीएस में आपका ज्यादा इससे है तो वो मतलब वो आपको मिल सकता है। Sure. Moving over to our next story, the Reserve Bank of India, RBI Governor Shaktikant Das has said that the new trinity of JAM, UPI and ULI represents a revolutionary step forward in India's digital payments. He explained that the Unified Lending Interface, ULI tech platform promoted by RBI will make frictionless credit possible in India. He was speaking during the inaugural address at Global Conference on Digital Public Infrastructure and Emerging Technologies in Bengaluru as part of RBI at 90 initiative. He noted that the current ecosystem of digital payments offer quick and safe transfer funds. Thus added, he noted that a Unified Payment Interface UPI launched by National Payments Corporation of India, NPCI, has made monetary transactions easier. Hence, RBI is now ready with a unified lending interface for a frictionless credit scheme. ULI was launched as a pilot last year. He said that this will be rolled out across the country soon. The RBI governor explained that ULI cuts down time for credit appraisal for small borrowers. It is entirely consent-based and the data privacy is protected. It will reduce complexity of multiple tech integration and play a similar role in transforming the lending ecosystem in India's journey. Moving from UPI to ULI, we'll talk so much more about that. But first, we have our next caller from Kolkata, KK Sehgal. Welcome to the show. Please ask your question. Good evening, everybody. Good evening. I have two questions. One is that is it necessary to open a Demat account for investing in a mutual fund? Second question is that my daughter is retiring after 6 years. She can afford about 5,000 to 10,000 rupees per month investment. Which mutual fund would you suggest for her to invest? Thank you. Actually, you do not. For a mutual fund, you do not have to open a Demat account. That is the first part. Now, for investing, obviously, I think you're referring to the systematic investment plan of 5,000 to 10,000. Given this program, I think we cannot recommend any particular mutual funds, but I think I can just say that you could look at the diversified, mutual fund that have a diversified equity, where they invest in diversified equity. That will be little more preferable. और हम उन्हें ये भी सलाह दे सकते हैं कि ज्यादा जानकारी के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और खुद भी कंपनीज के बारे में पढ़ करके थोड़ा बहुत जानकारी तो जुटा ही सकते हैं. Can rather actually call, I'm sorry for interrupting that, they can call again on a Sunday in Market Mantra, which is a mutual fund special, and then ask our experts any amount of questions. और नोएडा से सोनू मिश्रा हमारे साथ में है. सोनू जी, आपका प्रश्न क्या है? गुड इवनिंग एवरीवन. जी, गुड इवनिंग. मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली ना मैं 2 डीमैट अकाउंट रन करता हूँ. अब मैंने सपोज एक पे शेयर जो खरीदा था वो सपोज 100 रुपीज का खरीदा था और मार्केट में जब करेक्शन हुआ 20% नीचे, तो मैंने एवरेज आउट वहां पे ना करके दूसरे उससे मैंने शेयर बाई किया. तो आज के टाइम में सपोज 100 से 200 रुपीज का शेयर हो गया, तो मुझे कौन से वाले शेयर को मतलब अपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जो मैंने पहले खरीदा था 100 पे, या जो मैंने 80 या 670 पे खरीदा था उसको मेरे को निकल के एग्जिट करना चाहिए? थैंक यू. देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कुछ आप बेचना चाहते हैं तो, और 2 म्यूचुअल आपने ये किया हुआ है कि 2 डीमैट अकाउंट्स हैं, तो जिस डीमैट अकाउंट में जिसमें आपकी ज्यादा जो आप कह रहे हैं 80 और 100, तो जिसमें जो सिक्योरिटी 100 रुपए की है,
जब आप बेचे तो उसी डीमैट अकाउंट से डिलीवरी दीजिएगा, आपको फायदा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तैयार की गई नई जैव आर्थिक नीति आने वाले वर्षों में भारत को विश्व में एक अग्रणी स्थान दिलाएगी। नई दिल्ली में जैव आर्थिक नीति की जानकारी देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि देश की जैव अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ये 2014 की 10 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई जैव आर्थिक नीति का विकास जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नई नीति से जैव आधारित उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों का विस्तार भी होगा। विजय जी, ये एक तरह की नई बात हम कर रहे हैं जैव अर्थव्यवस्था में, यानी कि बायो इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में नया स्रोत है। एक नई ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको? देखिए, अभी तो बहुत आप समझिए इसको तो देखना पड़ेगा आगे कितनी हम लोग इसमें प्रगति कर पाते हैं। इस समय कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत कम जो है जानकारी है, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा इसमें कॉन्फिडेंस आने में। लेकिन जो ये कदम है, कदम बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी कि 10 साल के अंतराल के अंदर 2014 से 2024 के बीच में 10 अरब अमरीकी डॉलर से 130 अरब अमरीकी डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। ये रफ्तार क्या कहती है? ये रफ्तार तो बहुत अच्छी है, और अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो ये बहुत बड़ा सेक्टर इमर्ज करेगा हमारे पूरे अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये इसलिए ये इसके ऊपर फोकस है, ये बहुत अच्छा है। So we moved at one point of time from green revolution and white revolution to now when we are focusing on a purple revolution and jasmine farming. We are focusing on the blue economy in the Indian Ocean area. We are trying to increase agricultural exports and giving a new lease of life for the incomes of farmers. Do you think we have a long way to go in truly utilizing the true potential that India as a country has when it comes to agricultural products, or when it comes to things like the biotech sectors or things in the organic sector or the farms? But there's so much to explore, and we are yet to see any of it. We're just at the tip of the iceberg. I agree 100% with you. We are at the tip of the iceberg. All the areas that you mentioned, they are exciting areas, and I think they need to be promoted. And India has very good potential. I think intellectually, and Indians have the potential, especially like biotech, and this focus on blue economy. I think that is also going to be reap very good dividends for the government. You need to keep your focus, because many of these initiatives require a long-term policy, which means you just can't look at what happens in the next 5 years. You have to look at least 10 years or 15 years and keep up your efforts. So I think that's the challenge. कोलकाता से अतानु शाह हमारे साथ हैं, रेगुलर कॉलर हैं हमारे। अतानु जी, आपका प्रश्न क्या है? Good evening, sir. My question is from Laurgella 15th August, our Prime Minister informed to everybody that our India turned to a manufacturing world hub. So my question is, in this regard, PLI scheme or our entrepreneur participation, those participation, and also the FDI participation. In this regard, FDI is still important for us. Yes, I think you see, for manufacturing, I think FDI is critical. And along with FDI, I think technology transfer is the other leg on which, this manufacturing, if we have to compete with the globe, we need to have this. So I think FDI is important, because the commitment of any, foreign entity becomes far greater once they actually
have some skin in the game. So that's why FDI is important. विजय जी, अभी एफडीआईज और पीएलआईज की हम बात कर रहे हैं, लगातार इनको विस्तार दिया जा रहा है देश में। इकोनॉमी को मजबूत बनाने में छोटी जो कंपनी, जो छोटे छोटे हम उद्यम लगा रहे हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल हमें नजर आता है। अभी आज के समय में आपको ऐसा लगता है कि आगे जो हम सस्टेन करेंगे तमाम चीजों में, इनकी भूमिका और भी बढ़ती जाएगी? नहीं, एफडीआई की तो भूमिका है ही, और खास तौर पे शुरुआत में, क्योंकि एफडीआई के साथ टेक्नोलॉजी भी साथ में आती है। तो वो है, जहां तक स्मॉल एंड मीडियम का है, वो एफडीआई स्मॉल एंड मीडियम में नहीं आती है जी, जहां तक मैं आपको बताऊं तो। लेकिन स्मॉल और मीडियम में क्या है कि एंसिलरी यूनिट्स बहुत आती हैं, तो वो साथ में वो हो जाती है, और जो एम्प्लॉयमेंट है, जो और रोजगार जो है, वो ज्यादातर स्मॉल और मीडियम यूनिट से ही आता है। तो ये दोनों का समावेश है जिससे हमें उसको लाभ होता है। So these two things coming together will not only generate more employment opportunities through the small or the MSME sectors, but also will be good in building the larger economies. So coming back to the story of various sectors, when two of our callers in this very show have asked about India being a manufacturing hub, because the Honorable Prime Minister has been stressing on it. The government policies show us that the government really wants and is continuously pushing India to be a great manufacturing hub in the coming times. Do you believe that these manufacturing units which will be set up or are being set up, will they be just restricted to a few sectors, the great sectors that are there which show great potential, defense or automobiles or chips or AI-related robotics, or are there any other sectors, or rather many sectors that we are still not able to see, which will come into this manufacturing fore, and India will greatly benefit from it? I think the manufacturing emphasis is very important, but I think equally important is also, what we talk of ease of doing business. I can assure you that the ease of doing business is something that we have not really tackled. And somebody who comes in here, I mean, many times they feel frustrated because things don't happen on the ground. The kind of Inspector Raj that we are trying to dismantle is still very much there. So I think without that second input also being there, I don't think, very dramatic progress can be made. जयपुर से जितेंद्र जी इस बीच हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, नमस्कार सर। सर, ये पूछना चाह रहा था कि मार्केट तो खैर हाई है और ऊपर भी जाएगा, नीचे तो कोई जानता नहीं है, लेकिन अभी भी कौन सा सेक्टर जो है कम दाम पे मिल रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? और दूसरा प्रश्न है कि जैसे टाइल्स की कंपनी है जो 3-4 साल पहले आईपीओ आई थी, उसका प्राइस काफी कम है लेकिन वो प्रॉफिट में है कंपनी, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए, जो आप सेक्टर्स की बात करते हैं तो बहुत बात मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो सेक्टर्स जो मेरे को अच्छे लगते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज और हेल्थ केयर। तो ये सेक्टर्स मेरे को अच्छे लगते हैं। जहां तक आप आईपीओ की बात कर रहे हैं और ये आप कह रहे हैं कि उसकी कीमत काफी गिर गई है जबकि वो कंपनी प्रॉफिट में है, तो कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट में होना काफी नहीं है, कंपनी में क्या उसमें ग्रोथ आ रही है वो भी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ उस इंडस्ट्री के लिए क्या मतलब लोगों की सोच है। कई बार ऐसा होता है, और स्टार्टअप्स में तो आपने देखा ही होगा कि वो नुकसान कर रही है कंपनी, तब भी उसकी कीमत बढ़ रही है क्योंकि लोगों को उसका फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्योंकि प्रॉफिट है तो उसका रेट नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं? जी, आगे बढ़ते हैं। 5 प्रमुख एशियाई सूचकांकों में से 3 आज हरे निशान के साथ बंद हुए। हांगकांग को हैंग सेंग 1.05% ऊपर चढ़ा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.24% की बढ़त देखने को मिली और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में मामूली रूप से 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर जापान का निक्केई 0.67% नीचे आ गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.14% की गिरावट देखी गई। यूरोप के 3 प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.15% के लाभ में था और लंदन का फुट्सी 0.48% की बढ़त में था। वहीं जर्मनी के डेक्स 0.62% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। And moving over to our next story on the India-Singapore Roundtable, the second India-Singapore Ministerial Roundtable (ISMR) was held in Singapore today. During the meeting, the leaders of India and Singapore emphasized on ways of
further enhancing cooperation between India and Singapore in emerging and futuristic areas. Both sides deliberated upon 6 pillars identified under ISMR, which include digitalization, skill development, sustainability, healthcare and medicine, and advanced manufacturing and connectivity. Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Railways, Information and Broadcasting and Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw, and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal attended the meeting. The delegation from Singapore was led by Deputy Prime Minister of Singapore, Gan Kim Yong, and Indian-Singapore bilateral trade is continuously rising. Bilateral trade expanded from $6.7 billion in financial year 2004-05 to $30.11 billion in 2021-22. Singapore is India's 6th largest trade partner with a share of 2.9% of India's overall trade. Singapore continued to be the largest source of FDI into India. So, again, talking about bilateral relations, talking about the future, and especially the sectors which you had just mentioned before that. Those were the same sectors which were mentioned in the story: digitalization, skill development, sustainability, healthcare and medicine, advanced manufacturing and connectivity. Sir, do you think that these roundtable conferences go a long way in not just ensuring that whether the world order is actually in order or not, but India remains safe at a good, secure distance, and we maintain our ties along with maintaining a steady flow of cash for all our needs? See, Singapore is a global financial hub. So when you have a global financial hub, then, because it's a very small country if you look at it, but because, a lot of funds flow from Singapore, and as you have already mentioned, it has now become India's largest FDI source. So I think whenever you have these kind of meetings, the whole, we again stress upon what are the areas in which India would have a competitive advantage, and therefore, these are the areas where FDI can come in. So I think this kind of interaction is very helpful, and I hope that this interaction is not just limited to Singapore, but into, various other geographies of Europe as well as the US. अभी अगर साउथ एशिया के लिहाज से हम देखें तो सिंगापुर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, खासतौर पे तमाम इंडियन पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए. तो व्यापार की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण बन जाता है सिंगापुर के साथ में रिश्तों को और भी आगे बढ़ाना? नहीं, मेरे ख्याल से तो वो तो जरूरी है ही. जो सरकार की नीति रही है कि जितने भी देश हैं उनसे हम लोग अपना सहयोग और अपना व्यापार बढ़ाएं, ये तो बहुत जरूरी है ही. और कई बारी क्या होता है कि कई चीजें जिसको हम लोग एक बारी निग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो उसमें बहुत हमारा एक पोटेंशियल मिस आउट हो जाता है. तो जैसे सिंगापुर है, जैसे मैं कह रहा था, सिर्फ सिंगापुर पे हम लोगों को निर्भर नहीं रहना चाहिए, और भी इस तरह के बायलैटरल हमारे को करनी चाहिए, बिकॉज अब सारा दुनिया ही एक अलग तरीके से एक सोच है, और हमको जो भारत की प्रगति है उससे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, तो हमको फायदा उठाना चाहिए. Moving over to our next story, crude oil prices gained close to 3% today on renewed concerns that an escalating Gaza conflict could disrupt regional oil supplies, extending gains from Friday when the prospect of U.S. interest rate cuts lifted the global economic and fuel demand outlook. The global oil benchmark Brent crude is trading at 2.64% up to $81.11 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI is also trading up 2.86% to $76.97 per barrel when reports last came. Sir, your thoughts on the crude oil prices right now, which have gained, and also on the global situation which is there? Well, I think crude has been going like a yo. It's going up and down. I think this $80 is something where we can, more or less the average, plus minus $5. और कार्यक्रम के अंतिम खबर की तरफ बढ़ते हैं. सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. आज शाम 24 कैरेट सोना 460 रुपए बढ़कर 72,410 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर. वहीं हम चांदी की बात करें तो चांदी आज 730 रुपए ऊपर चढ़कर 86,320 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई थी. विजय जी, मार्केट मंत्रा में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद.
And before we close, a reminder of the headlines. Indian equity indices ends on strong note with Nifty crossing 25,000 level. Sensex gains 611 points. Nifty closes at 25,010. Second, India-Singapore ministerial roundtable held in Singapore. Bilateral trade crosses $30 billion. And crude oil prices gain 1%. Brent crude is trading 2.25% up to $80.80 per barrel. And that's it in this edition of Market Month. For now, goodbye. Market Mantra.